Namaste. Human heart, its parts, pathway of blood flow. When we learn about transportation in organisms and specifically in human beings, then it is essential to know about the human heart, how it functions, and how blood flows through the human heart. So in today's lesson, we are going to learn about the parts of human heart and the pathway of blood flow by using different diagrams and images. I'll try to explain to you the human heart, its location, its parts, and the pathway of blood flow by using colored images, 3D images, as well as black and white diagrams. The diagrams that you will be using during your examination. And as a part of the teaching learning process, when this lesson is over, you should be able to draw a well-labeled diagram of the human heart. You should be able to show to us different parts whenever asked to you or during the examination. And at the same time, you should also be in a position to explain the pathway of blood flow of human heart. As I have just mentioned to you that I'll be using different images, 3D images, fluorescent images to show you the structure of the human heart and its location. So if you can see the first image here, it is a 3D image of human heart, very realistic looking. Realistic looking का क्या मतलब हुआ कि काफी असली हार्ट से मिलता जुलता है ये देखने में, रेडिश इन कलर, और इसका साइज क्या है आपके अपने हाथ की मुट्ठी के बराबर का है. हार्ट साइज ऑफ योर फीस्ट. द साइज ऑफ योर हार्ट इज द साइज ऑफ योर फीस्ट. When we look at a real heart, then that is bright red in color. But because it's an image, so it appears to be reddish, but not very bright. Then the next thing is we should know where is the heart located in our body. हमारे body में हमारा जो heart है वो कहाँ present है. जैसा कि आप ये दूसरे image में देख सकते हैं, ये हमारे दोनों lungs के बीचों बीच present है ना. और ये किस हिस्से में प्रेजेंट है? क्या ये हमारे बॉडी के पीछे की तरफ के हिस्से में प्रेजेंट है? नहीं, इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट. ओके, एंड वेयर एग्जैक्टली? स्लाइटली बिहाइंड एंड टू द लेफ्ट ऑफ स्टर्नम. While reading about the respiratory system, we have come to know the location of sternum, which is here. So slightly behind the sternum and left of sternum. This is left lung. Slightly towards the left of the sternum, our heart is present. And it is protected within our rib cage. The rib cage is not shown here, but we know that lungs are present within the rib cage. So also the human heart. It is protected there. Now comes the question, what are the different parts of the human heart? And in order to get a very clear picture of how to draw the diagram of human heart and show its various parts, I'm using a black and white sketch of the human heart, which shows its parts and the path of blood flow. But we will be discussing about the path of blood flow by using colored images in the successive slides. हम इस स्लाइड में हम देखने की कोशिश करेंगे, जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी हमने जो हमारे मुट्ठी के बराबर के हार्ट के बारे में देखा, उसके बाहर के स्ट्रक्चर को देखा,
अगर हम अंदर से अपने हार्ट को देखते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं। अब हम देख सकते हैं कि अगर आप ऐसे करके पूरे लेफ्ट टू राइट चारों तरफ हार्ट का जो स्केच है उसको देखें तो लगे क्या क्या नाम लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट देन let us know about the parts one by one and let us start it from the left side. If you can see the cursor, जहां लेफ्ट लिखा है इसको हम लेफ्ट साइड कहेंगे, एंड जहां अभी मैं कर्सर दिखा रही हूं जहां राइट लिखा है इसको हम राइट साइड ऑफ द हार्ट कहेंगे। तो अब हम लोग पार्ट्स को लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द पार्ट्स? लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट आर्ट्रियम जिसको हम ऑरिकल भी कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन वी हैव aorta, then we have pulmonary veins, right atrium or right auricle, right ventricle, then pulmonary arteries here. You look at the cursor while I pronounce the name of the parts. Then we have superior vena cava, and in the sketch it is written here vena cava from upper body, it is called superior vena cava, and vena cava from lower body, it is called inferior vena cava, and between the left and right chambers of the heart there is a partition, a dividing wall, which is also called as septum. So the various parts of human heart are, now repeating it one by one as it is written in the slide. So pay attention and listen to it carefully. So parts of the human heart are left atrium or left auricle, left ventricle, aorta, pulmonary veins, right atrium or right auricle, right ventricle, pulmonary arteries, superior vena cava, inferior vena cava, and septum. Now we have learnt about the parts from the left and right side of the heart. We have known the arteries now, the veins now. Now, by using the knowledge of these parts, let us try and understand the path of blood flow. Color plays a very important part which helps us to memorize things. So now if you look at the slide, we have used two distinct colors, red and blue. हमने यहाँ पर red और blue दो distinct colors use किया है blood के flow को दिखाने के लिए। रेड कलर यूज किया गया है उस ब्लड के लिए जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, और ब्लू कलर यूज किया गया है उस ब्लड को दिखाने के लिए जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे, जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है उसको हम कहेंगे ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम है उसको हम कहेंगे ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये हार्ट के डायग्राम को देखते हैं और ये ब्लू कलर के पाथ को देखते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर का पाथ है मतलब ऑक्सीजन पुअर ब्लड का पाथ है। क्या दिखा रहा है कि यहां अभी सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से ऑक्सीजन पुअर ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट में आ रहा है। ठीक है, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से ऑक्सीजन पुअर ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से वो किस में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज में। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज ऑक्सीजन पुअर ब्लड को लेकर कहाँ जा रहे हैं, वो पुअर ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजन पुअर ब्लड को लेकर लंग्स तक जा रहे हैं। अब आगे क्या होता है, लंग्स में ये ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है और लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट आर्टरियम में आते हैं, फिर वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, वहां से आउटा में और फिर आउटा से हमारे बॉडी टिश्यूज में। इस तरह से जो ब्लड है वो हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड से होते हुए
पूरे बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से राइट साइड ऑफ द हार्ट में आता है और वहां से लंग्स में जाता है। सो अब अगर आप इमेज के लेफ्ट साइड को देखेंगे, इसमें हमने आपके लिए एरो मार्क के साथ ब्लू और रेड कलर में दिखाया हुआ है कि which parts of the heart are involved in transporting oxygen rich blood, and those parts are labeled here with red arrow mark, and the parts of the heart which are concerned with transporting the oxygen poor blood are marked with blue colored arrow marks here. So let us read this pathway once more. From the body tissues, oxygen poor blood is brought to the heart by superior and inferior vena cava to the right atrium. From right atrium, oxygen poor blood goes to right ventricle. From right ventricle, oxygen poor blood goes to pulmonary arteries. From pulmonary arteries, oxygen poor blood goes to lungs. Now the blood which comes from lungs through pulmonary veins is oxygen rich. It goes to left atrium, then to left ventricle, then to aorta, and then to the body tissues. And this way, the continuity of the blood flow within our heart and in our body is maintained. This is how blood flows through the heart, through the lungs, and is made available to each and every part of our body. This is a colored image of human heart with labels, with labeling of different parts. And during the exam, you can draw this black and white diagram of the human heart and show the pathway of blood flow. Okay. In this colored image, you can find two more additions regarding the valves, mitral valve and tricuspid valve. We will be learning about these valves in another lesson. Now, there is some work for you. As you know that we are in the stage of learning when we have to show some kind of competency regarding our understanding of a topic, कि हमें कोई टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको दिखाना होता है, और उसको हमें इस तरह से समझना होता है कि हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी इंफॉर्मेशन आए उस टॉपिक के बारे में, हम उसको समझ सकें, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पता कर सकें और उसके बारे में हम लोगों को बता सकें। तो आज हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। तो इसी हार्ट के ऊपर एक न्यूज आया है 3 दिन पहले एनडीटीवी में, और उस न्यूज में ये कहा गया है कि young people are suffering from heart attacks. Many young people are suffering from heart attack. तो वो न्यूज मैंने आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है. When you watch this video, you pause this part of the video. आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करेंगे इस स्लाइड पे और इस न्यूज को रीड करेंगे. ठीक है, ये हार्ट अटैक के ऊपर है. हार्ट अटैक का नाम अलग भी क्या है, क्यों हार्ट अटैक होता है, कौन से एज ग्रुप में ज्यादा हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है. उसके बाद क्या करना है, आपको ये होमवर्क बनाना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू राइट व्हाट इज हार्ट अटैक, व्हाई पीपल सफर फ्रॉम हार्ट अटैक, which part of the heart suffers harm due to heart attack, and what is the other name of the heart attack. ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों के आंसर आपको यहीं मिल जाएंगे. ये जो न्यूज एक्सर्प्ट मैंने आपके लिए यहाँ लगाया है. ओके, और व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द हार्ट अटैक, ये भी आपको न्यूज से मिल जाएगा. और अगर नहीं मिला तो आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा या फिर कोई ना कोई टेक्स्ट बुक में आपको जरूर मिलेगा. Okay, so with this we come to the end of this video lesson. I hope you enjoyed it, and I hope you go through this video lesson to answer some of the important questions that I have given you as a part of your learning, reinforcement or homework. Thank you and have a stress-free day.